أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear my fellows, students, friends, and others as I was taking actually the CBC interpretation in session wise because it is an important investigation and one should see it properly and one should interpret it properly. If you are advising blood CBC, for example, you are bound to see it properly and interpret it properly. Whether this CBC is normal to you or whether it is abnormal. If it is abnormal, what are the abnormalities and what are the possible differential diagnosis coming into your mind? What other investigation might be helpful? This is the session actually, no? Because actually after clinical interpretation you go for the lab assessment. Somebody is spending 1500 rupees for CBC or blood CP. In Pakistan, ESR should be advised separately, and in some labs they should like to advise it by you peripheral blood film. It means that there are sessions which may be possibility of what is that you have to pay more. So erythrocyte segmentation rate, if you want to do it, first thing, it is the acute phase reactant. It indicates the activity of the body, the cellular activity of the body. This at erythrocyte segmentation rate indirectly. Now, how will you calculate it? So we have to go for there are two methods, Westogen method and Winthrop method. This is the method which is commonly used because there are many tubes you are seeing here. One for the first hour, second hour, third hour, fourth hour, fifth hour. Actually, ESR, remember, it is not a diagnostic test in most of the cases. It is the prognostic test. If somebody ESR is high or somebody ESR is very low, in both sides of the polar ends, it is prognostic. It is not diagnostic. Repeat it. It is not diagnostic. It is prognostic. Same as the Montreux test. It is not diagnostic. In most of the cases, it is prognostic. The Westogen method is popularly used because it has got the plenty of tubes and the EDTA is used here as an anticoagulant. In the another method, Winthrop method, which is called, the other anticoagulant is used because if you are not using anticoagulant, the RBC will clump and there will be false reading. So it is the rate of segmentation of erythrocytes in the in vitro, in serum, in plasma. It is the sedimentation of the erythrocyte in the plasma in vitro in the first hour or in the second hour or in the third hour, so on. But usually we take the ESR in per first hour. Westogen method calibration is more than 150. More than 150, it may be higher than that. And in Winthrop method,
that is the Winthrop method, you can only measure the ESR up to 100, not more than 100. So the popular method is the stringent method actually in most of the labs. Now erythrocyte segmentation, there you take the blood, put it in the tube, stopwatch should be started out for the first hour. The blood will segment, definitely the red column will be seen afterwards. Here is the red column, and the plasma is out. You minus it if it is from the whole, from this plasma, the remaining part you have is the segmented RBC, and this is called erythrocyte segmentation rate per first hour. So this is how we calculate the erythrocyte segmentation rate. Important point about it that it is acute phase reactant. When you say that it is the acute phase reactant, means that the number of the RBC, they attract each other by the phenomena of what is called as some type of the transmitter phenomena. They adhere and they jump down or segment down. If the plasma viscosity is less or diluted plasma, the ESR definitely become low, because it depends upon the viscosity of the plasma. If it is decreased viscosity in any condition, high blood volume for example, in any case, the ESR will be low. On the other hand, if the plasma viscosity is more in certain conditions, hyperviscous, there will be decreased ESR. Decreased ESR and increased ESR. It depends. So in the condition here with there is one thing is the viscosity, second is the attraction of the RBC to RBC, or destruction of the RBC to RBC by the other factors which are operating in the blood. In Pakistan, in the male, normal ESR we will take 15 to 20 millimeter. It is not 0, long, 5, no, because the transient injury in these persons going on. For example, in case of the nowadays very early prostatic enlargement occurs, you have to force the urine out. In case of the constipation, you force the feces out. Now these are the activities you are doing more than normal. Therefore, the ESR will be taken significant when in a male it is more than 20. In Pakistan, it is a study it is done by Professor Alam from Jinasin Medical University, and it is 1978 or 79. He was the only person who studied the normal ESR in normal person, in males in Pakistan and in females in Pakistan. Do not look the bracket which is given in front of the ESR, because it was delivered by the lab, and the lab is actually not doing any research work. They are taking this ESR from the standardized book or from the WHO recommendations. So ESR in the female in Pakistan, in the fertile group of ages, up to 35 millimeter is now taken as insignificant. You can say insignificant.
Insignificant ESR in the female in Pakistan is less than 35, and in male it is less than 20. Most of my fellows will not agree, but you have to agree, sir, because it was published in Journal of Pakistan Medical Association and in a journal of College of Physician and Surgeon. You have to accept it, because this is the research done by anybody. भाई किसी में तो करा जो रिसर्च करे यार, कौन रिसर्च करता है, कौन तहकीक करता है, कौन तनकीद करता है, मुझे आप ये बता दीजिए। अगर प्रोफेसर ने कह दिया ऐसा है तो ऐसा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रोफेसर शरीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने स्टेथोस्कोप रखा और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं इसमें थर्ड हार्ट साउंड सुन रहा हूँ। तो उन्होंने स्टूडेंट से कहा आप भी सुने, देखें ये S3 है। अब उन्होंने सुना, एक ने वाला यस, दूसरे का यस, तीसरे ने कहा यस। हमारे एक दोस्त हैं, 3rd ईयर में थे वो, उन्होंने सुना, कहा सर ये थर्ड हार्ट साउंड नहीं है, ये जो है ना सर ये क्लिक है, ये सर क्लिकिंग साउंड, ये थर्ड हार्ट साउंड नहीं, ये क्लिकिंग है। उन्होंने कहा कि अच्छा हट जाओ, फिर सुना, फिर अंदर ले गए कमरे में, सारा कमरा बंद किया, फिर सुना। क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट बड़े एक्सपर्ट बंदे थे, डॉक्टर शरीफ चौधरी साहब, सिविल हॉस्पिटल कराची। वो आए, उस लड़के को उन्होंने बहुत शाबाशी दी और कहा कि इसने देखो मुझे चैलेंज कर दिया कि ये S3 नहीं है, ये क्लिक है, सिस्टोलिक क्लिक है, और ये सही कह रहा था। तो इस तरह से जो है ना आदमी जो है ना, अगर बहुत बड़ा आदमी होता है जो अपने गलती को मान लेता है, तो तहकीक से जो है ना ये पता चलता है ना, रिसर्च वर्क से, उससे कौमें आगे बढ़ती हैं, याद रखिएगा। और तनकीद जो है ना इसीलिए की जाती है, जब तनकीद की जाती है तो तहकीक की जाती है। दोनों चीज़ें आपसे बर्दाश्त ही नहीं, आपका मिजाज ही नहीं है जी बर्दाश्त करने वाला। आप ऐसा अंदाजा लगाइए कि एक ड्रग रेलॉक्सिन के नाम से रिलीज हुई थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, वो बहुत इफेक्टिव ड्रग थी, एज ए मसल रिलैक्सेंट विद एनाल्जेसिया। उसको 6 महीने में इन्होंने स्टडी की, अमेरिकन ने और बैन कर दी कि ये हेपेटिक फाइब्रोसिस करती है। उस पर उनके $3 अरब खर्च हो गए। जो रिजल्ट बरामद हुआ उस स्टडी का वो ये था कि इसका रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस कौम ने उस दवा को रुकवा दिया। जैसे आजकल जो है रेनालिडीन को रोका हुआ है इन्होंने, अभी वो रिसर्च कर रहे हैं कि रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है। तो तहकीक जब आती है, जब तनकीद की जाती है। मैं बात कर रहा था, इसीलिए आपसे बोल रहा था इंक्रीज, ये सारा का मतलब है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और डिक्रीज ये सारा मतलब होता है सिग्निफिकेंट डिक्रीज। इंक्रीज ये सारा सीन इन प्रेगनेंसी, खासतौर पर फर्स्ट टाइमर में। अनीमिया, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। मैक्रोसाइटोसिस, सेल बड़े बड़े हैं, तो वो बड़े बड़े होंगे तो जगह भी ज़्यादा घेरेंगे। इन्फ्लेमेशन, उसमें ज़्यादा तादाद में जो है ना वो सेल बनेंगे, बिकॉज इक्विप रिएक्टेंट है ये। जब तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। कैंसर में भी इसी तरह होता है, ये मेटास्टेसिस होता है या ना भी हो, दोनों सूरतों में प्रोकास जो ट्रांसमीटर्स निकलते हैं वो ESR यानी इरिथ्रोसाइट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उसको डम डाउन कर देते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन बोथ सेम विल हैपन। मल्टीपल मायलोमा में भी ऐसे ही होता है। वो क्या होता है उसके अंदर कि IgG या IgM, ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, और ये जो होता है ये ग्लोबुलिन्स होते हैं। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो ESR के दरमियान उसको चिपकाते हुए अंदर ले आते हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये जो याद रखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इन केसेस ऑटोइम्यून डिजीजेस स्पेशली SLE
उसके अंदर कहते हैं रैपिड ESR, यानी 80 मिलीमीटर ESR हो जाएगा आधे घंटे में। 80 मिलीमीटर 75 मिलीमीटर आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में फिर पता नहीं कितना होगा। इसको कहते हैं रैपिड ESR। ये आपको मिलता है ऑटो इम्यून डिजीज में, हेक्टिक, और इसको कहते हैं हेक्टिक ESR, इसको रैपिड ESR भी कहते हैं। अब उन कंडीशन जिनमें फाइब्रोनेजिन बढ़ जाए वो भी यही काम करेगी। विस्कोसिटी जो है उसके अंदर उसको चिपकाएगी। ये वो प्रोटीन है जो चिपकाने वाले हैं, स्टिकिंग करने वाले हैं। लिहाजा हाइपर फाइब्रोजिनीमिया जिनमें होता है उनमें ESR बढ़ जाता है। इस तरह प्लाज्मा ग्लोबुलिन मैंने पहले बता दिया आपसे, जिन कंडीशन में भी वाल्डरस्टोन मैक्रोग्लोबुलिमिया, पर्म सिंड्रोम, मल्टीपल मायलोमा, इन सब में ESR बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द RBC टू ईच अदर। ट्यूबरकुलोसिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये भी जो साइटोकाइन रिलीज करता है स्पेसिफिक, और अट्रैक्शन कर देता है RBC की। इस तरह से डंपिंग ज़्यादा हो जाती है और ESR बढ़ जाता है। मगर ये जो है प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है इसकी। मिसाल के तौर पे आपने ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ESR कराया, अदर फीचर के साथ आपने डायग्नोसिस बनाई स्पेसिफिक, 80 मिलीमीटर था, आपने उसको ATT स्टार्ट की, 1 महीने बाद ESR कराया तो अब हो गया 60, 3 महीने बाद कराया तो वो हो गया 50, और आपने जो है 4 महीने बाद कराया या 6 महीने बाद कराया तो वो हो गया 30, तो नॉर्मल हो गया वो। पाकिस्तान में तो वैसे ही मैंने आपसे कहा कि मेल में 35 तक, तो मेल में तो 20-25 तो वैसे ही नॉर्मल होता है, तकरीबन नॉर्मल हो गया। और आइंदा 2 महीने में वैसे भी नॉर्मल हो जाना है उसमें, अगर उसको रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन ना हुआ या ट्रॉमा ना हुआ। डिक्रीज ESR आपको नज़र आता है बहुत कम कंडीशन में नज़र आता है, तो ये उन कंडीशन में नज़र आता है कि हीमोग्लोबिन कहलाती है। मिसाल के तौर पे सिकल सेल्स, पॉलीसाइथीमिया, स्फीरोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस, इंक्रीज प्लाज्मा विस्कोसिटी, जिनमें भी विस्कोसिटी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, उनके अंदर डिक्रीज ESR हो जाएगा। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स जिसे आप कहते हैं, उनके अंदर सब में डिहाइड्रेशन में आप करा के देखेंगे ESR का भी तो डिक्रीज हो जाएगा ESR विस्कोसिटी को जो है। और इसी तरीके से मैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एरियल सिक्रेशन की बात कर रहा था, साइड की, उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना ESR की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, उसमें ये हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर आप चलें, जिसको डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं, तो उसके अंदर प्लाज्मा जो है वो कम हो जाएगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया वेरा रबरा, थर्मोसाइटोसिस है, और स्फीरोसाइटोसिस है, एडेप्टोसाइटोसिस है, माइक्रोसाइटोसिस है। स्पेसिफिकली आपको 70-80% माइक्रोसिटिक टाइप ऑफ अनीमिया मिल रहा है, उनमें भी डिक्रीज ESR हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेल्स विच आर मोर, बिकॉज ऑफ द सेल्स अट्रैक्शन आर मोर। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है ना अपोजिट फिनोमेना होगा कि सेल का साइज छोटा हो जाएगा तो ESR जो है वो ज़ाहिर नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए, और अगेन इसके अंदर अट्रैक्शन कम हो जाएगा माइक्रोसाइटोसिस में, तो डिक्रीज हो जाएगा ESR। तो ये जो है ना ESR का कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको। ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, ये डायग्नोस्टिक नहीं है, इट इज प्रोग्नोस्टिक यस इन सर्टेन कंडीशन। वो कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर सीवियर हेडेक होता है और जिसको सिर्फ डायग्नोसिस आपके पास होती नहीं है करने के लिए, सिर्फ ESR से डायग्नोस करते हैं। अगर ESR उसका 80-100 है, सीवियर थ्रॉबिंग पेन है, वन साइडेड पेन है, टेम्पोरल साइड पेन है, सीवियर पेन है,
वो कौन सी कंडीशन है? वो एक ही कंडीशन है, जॉइंट सेल आर्टेरियाइटिस या टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस। उसमें ESR से जो है ना डायग्नोसिस बनाते हैं विथ क्लिनिकल फीचर्स। अदरवाइज इट इज़ डेफिनेटली a prognostic value, not diagnostic value। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको छोटा सा डिस्कशन था, आपको समझ में आया होगा और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हम लास्ट सेशन इंशाल्लाह इसके बाद आपको बताएंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बारे में।